थोड़ा रिवाइज कर लो सब formulas. Today we'll be starting with the sum. Tell me what is the meaning of the term probability, Surum? Yes, it is a chance or it is the most likely. How you can define the term probability to be as? Yes, it is defined to be as the ratio of the number of elements which are present in the event to the number of elements which are present in a sample space. So that means if A is any event, if A is any event, then probability of A is equal to correct. It is n of A upon n of S. Probability of B is equal to मुझे पता पड़ा probability of dash event. Probability of a dash event, it is considered to be a zero. Probability of a dash event, it is equal to 1. Probability of any event lies between dash dash including 0 and 1 के excluding 0 and 1. कितना where were you? कितना
कितना चौधरी? 10 साल कहाँ गई थी तुम? Why you were absent for this many days? Tejal, your friend, what's her name? जो 12th में तुम्हारे बाजू में बैठती थी. Is present, Davina. ये कितने दिन ऐसा होता था? कितना? ये पूरा चैप्टर तूने पूरा उसमें ये मिस कर दिया. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन. चलो, we were discussing what are the points to remember. Very good. Points to remember. Come to the fourth point. Again, it is a formula. Make a note. Probability of A plus probability of A dash answer is always equal to 1. P of A plus P of A dash. The answer for that it is always equal to 1. And now you people will answer when we talk about this term probability of A dash. चलो मुझे बताओ what is probability of A dash means. Probability of A dash means what? Yes, A dash means it is a complement of the event. But what is the meaning of the term complement of the event means? Complement of the event means an event which is comprising of all the possible outcomes which are not present in which are not present in
A, but they are present in sample space. It is called to be as. It is called to be as A complement. So P of A plus P of A dash. Answer is equal to 1. So chal on the same line, start answering. Probability of B plus probability of B dash. Answer will be equal to probability of B. चलो सब लोग बोलो फटाफट. करेक्ट. आंसर इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो इवेंट होता है ना बड़ा इवेंट, but it is called to be as happening, whereas जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट होता है ना बड़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट, it is called to be as the not happening event is happening. Complement of the event means it is considered to be as not happening. देख मैं तुम लोग को उसका एग्जांपल बताता हूँ. Example of happening and non happening. When a problem is given to the student, and that problem it is been solved by the student, so it is being called to be as the happening. But that problem, if it remains unsolved, then it is called to be as not happening. A marksman who is firing a shot, and in that shot, if the target is hitted, if the target is hitted, so it is being called to be as the happening. But in that shot, if the target is पढ़ाई के not लिए hit, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। not heated, not heated, so it is called to be as not happening. In short, ऐसा समझ बड़ो. In short, ऐसा समझ. Happening means it is a success. Not happening means but it is a failure. Happening means it is a success. Not happening means but it is a failure. In other words, the probability of success plus probability of failure, answer is always equal to 1. Answer is always equal to 1. And from that relation,
P of A plus P of A dash P of A plus P of A dash is equal to 1. Okay, from here we can derive the two formulas. P of A it is equal to 1 minus P of A dash. P of A dash it is equal to 1 minus P of A. That means out of the two, if you know the value of any one, you can find the value of other. For example, if you know the probability of happening, from which you can find the probability of not happening. And if you know the probability of not happening, you can find the probability of happening. And the last one is point number 5. Point number 5 is probability of at least one. Probability of at least one is equal to 1 minus probability of none. So when I'm talking about this word at least one का मतलब बेटा होता है कम से कम वन, जिसमें बेटा वन चलेगा नहीं तो वन से ज्यादा भी चलेगा पर वन से कम नहीं चलेगा, वन से कम नहीं चलेगा. So whenever you want to find probability of at least one, so you can make the use of this formula. समझ में आया तुम लोग को? फॉर्मूला बेटा सिर्फ एटलीस्ट वन के लिए काम करेगा, बाकी एटलीस्ट टू, एटलीस्ट थ्री, एटलीस्ट फोर के लिए बेटा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है. तो तुम लोग बेटा प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोग अपना कोई घर खुद ही बेटा फॉर्मूला वहां पे यूज मत कर देना, समझा? And now let me start with the sums. Take out that वही शीट में है सम्स पीछे एक्सरसाइज करके मिलेगा, देखो वहां पे. चलो फर्स्ट we are going to start but with the basic sums. और बेसिक सम्स बड़ा एक बार समझ में आ गया, फिर ग्रेजुअली बड़ा धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे सम्स में. ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग बड़ा मैं स्टॉप कर रहा हूँ. नए स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा. चलो सब लोग रेडी? फर्स्ट सम, if an unbiased coin is tossed twice
coin. Sum is based upon tossing of a coin. It is been tossed twice. Find the probability of obtaining at least one tail. बड़ा बहुत ही सबसे खतरनाक वर्ड आ चुका है बड़ा, और वो खतरनाक वर्ड है बड़ा कौन सा? एटलीस्ट। एटलीस्ट बोला है बड़ा, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब बड़ा होता है मिनिमम। बड़ा ये सबसे खतरनाक वर्ड्स है, तुम लोग कहीं पे लिख लो बड़ा। ये वर्ड्स बड़ा तुम्हारे सब में मिस्टेक कराएंगे बड़ा। Write down the meaning of the word बड़ा। At least, at least means minimum. Minimum means कम से कम। कम से कम means कमीत कमी। कमीत कमी means ઓછામાં ઓછું। સમજાણું દીકરા તમને લોકોને? કે ન સમજાણું? At most. At most means maximum। maximum means ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा means जास्त जास्त। जास्त जास्त means વધારેમાં વધારે। સમજાણું દીકરા આપણે? સમજાણું? ચાલો સારું। And now when we are going to start with certain type of sums, certain type of sums they will be solved first by writing the sample space. From that sample space we'll find n of s. From that n of s we'll find out the favorable event, from which we'll find the number of elements, and then by using the formula we'll be getting the sums। चलो start। मेरे साथ साथ करो बड़ा, स्टेटमेंट लिखना है। since since an unbiased coin, since an unbiased coin is tossed twice। चलो मुझे बताओ when a coin is tossed twice it is comprising of how many outcomes? Sample space it is comprising of, अरे भाई 2 coins, डाइस नहीं अभी शंकर, अभी 2 coins it has how many outcomes? 4 outcomes and that 4 outcomes
that you can write but in the sample space S is equal to H H H T P H P T. Therefore, N of S, it would be equal to 4. अब उसके बाद ये लेट अब ये देखो यहाँ पे लेट कैपिटल ए बी द इवेंट, वो लिखने की जरूरत नहीं है. लेट कैपिटल ए बी द इवेंट of getting at least one tail. Let A be the event of getting at least one tail. तो वहां पे बड़ा तुम लोग नोट कर सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बड़ा वन टेल, एटलीस्ट वन टेल. एटलीस्ट वन टेल मीन्स मिनिमम वन टेल जिसमें वन चलेगा, नहीं तो वन से बड़ा ज्यादा भी चलेगा बट वन से कम नहीं चलेगा. तो चलो बच्चा लोग मुझे बताओ मेरे फेवरेबल आउटकम्स बड़ा कौन कौन हो गए. क्या एच एच मेरा फेवरेबल आउटकम हो सकता है? नहीं. तो इट विल बी एच टी पी एच टी टी. करेक्ट. तो ये देखो you will get the favorable outcomes to be as well. Therefore, A is the event whose favorable outcomes, but it will be H P P H P T. ये बता, तो इसका आंसर मिलेगा बड़ा N of A is equal to बड़ा 3. चल मुझे बताओ बड़ा N of A is equal to 3. So by knowing the value of N of A,